Good morning, everyone. Now, today we are going to start the chapter 1, that is Constitution and Constitutionalism of the subject Indian Constitution. Okay, so let's start with the term Constitution. Okay. So, now what is Constitution? The Constitution is the supreme law of the land. All other laws have to conform to the Constitution. The Constitution contains laws concerning the government and its relation with the people. It is concerned with two main aspects, that is the relation between the different levels of government, that is central and state government, and between the government and the city. So mainly कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और बाकी जितने भी लॉज हैं उन सबको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये सारे लॉज जो है रिगार्डिंग गवर्नमेंट और जो पब्लिक है, पीपल के लोगों के जो रिलेशंस है उनके रिगार्डिंग जितने भी लॉज आपको मिलेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे. तो बेसिकली ये आपको डिफरेंट रिलेशन बताता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच का. ओके, नाउ रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो गवर्नमेंट और दो पीपल. मेनली ये दो लोगों के बीच का, दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, गवर्नमेंट के बीच का, सिटीजन के बीच का. ठीक है. नाउ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव जो that makes laws, judiciary that interprets laws, and executive that enforces laws. Okay, एक हो गया जो लॉस को बनाता है, दूसरा इंटरप्रेट करता है यानी कि लॉस को देखता है कि क्या कंक्लूजन है उसका, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, राइट, और एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एनफोर्स करता है. टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम दें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न. These rules together make up, that is, constitute what the entity is. When these principles are written down into a single collection or set of legal documents, those documents may be said to comprise a written constitution. So basically ये क्या है, set of fundamental principles है जिसके अकॉर्डिंग जो है, जो हमारी कंट्री है या गवर्नमेंट जो है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करती है. ओके, बेसिकली it contains the rules and regulation for all, for the government as well as for the citizen. Another technical definition अगर हम देखते हैं तो document containing laws and rules which determine and describe the form of government, the relationship between the citizens and the government, that is called the Constitution. An observation by Patrick Henry: the Constitution is not an instrument for the government to restrain people, it is an instrument for the people to restrain the government. So, क्या ऑब्जर्वेशन पैट्रिक हेनरी ने क्या लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल कर रही है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जिससे लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं. हमारी तो वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है. तो यहाँ पे लोगों की हेल्प से ये चीज बनाई गई है. जो रिटर्न लॉज है वो मतलब एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का. ओके, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को पूरा राइट दे दिया है कि आप लोगों को कंट्रोल करो, नहीं, लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं. किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं आपको पता ही है, राइट. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? अब हमने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, रिटर्न लॉज, हमको जो लॉज हमने जो रूल्स बनाए थे दैट इज इन रिटर्न फॉर्म. क्यों जरूरत पड़ी हमको? तो इन जनरल वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली. द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. Sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interests, and the Constitution helps us guard against this. All the three organs of government, that is executive, judiciary, and legislative, functions within the Constitution. All the three organs of government, including ordinary citizens, derive their power and authority, that is fundamental rights, from the Constitution. If they act against it, it is unconstitutional and unlawful. So it is required. So Constitution is required to have authoritative allocation of power and function, and also to restrict them within its limit. क्यों जरूरत पड़ी कि भाई एक तो सबने डिवाइड किया कि आपको क्या काम करना है, सबको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या काम करना चाहिए, बट किस लिमिट तक किसी को, सपोज किसी को कोई पावर दी है तो उसकी क्या लिमिट तक वो पावर को यूज कर सकता है ये भी उसे पता होना चाहिए. तो ऑल दिस गिवन इन रिटर्न फॉर्म. इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है कि सबको एक तो पता होना चाहिए कि हमें क्या काम हम कर सकते हैं और किस लिमिट तक कर सकते हैं. वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन.
to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted, to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government makes sure that the citizens will never trespass them, to enable the government to fulfill the separations of a society and create conditions for a just society. Now the second term was there, that is constitutionalism. ठीक है, हमने कहा कि हमें लॉज दिए गए इन रिटर्न फॉर्म, उसको कहाँ तक किस लिमिट तक उसको फॉलो करना है और नहीं फॉलो करेंगे तो उसके क्या जो है रिजल्ट होगा, ये सब हमें पता होना चाहिए। उस चीज को मानना, जो रिटर्न फॉर्म में हमें दिया गया उस चीज को मानना, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। So it is a system of governance in which the power of the government is limited by laws, checks, and balances in order to reconcile authority with individual and collective freedoms. The principle of constitutionalism must be understood in opposition to non-constitutionalism, a system in which the government uses its power in an arbitrary fashion without respecting the citizens' rights. The government को अगर पावर दे दी जाए और वो विदाउट रिस्पेक्टिंग सिटीजन राइट उसको यूज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, राइट। नाउ सिमिलरिटी क्या है दोनों टर्म के बीच में? So both are overlapping concepts, although the first refer to a written body of law and legislation, and the second is a complex principle and system of government. Some of the similarities between two include: first, both refer to the limits and features of the system of governance of a country. Constitutionalism would not exist without a constitution, and the constitutional way of governing a country requires limits and boundaries to the central authority. Both influence actions of both government and the population. Besides providing a framework for political and institutional structure, the Constitution sets out the main rules that all citizens should respect. Furthermore, ruling in a constitutional manner means that the government applies the regulations outlined in the Constitution to limit and manage the Citizens Act, always respecting individual and collective rights. Both protect and preserve individual and collective rights, preventing the central government from abusing of its power and infringing on the citizens' basic freedoms, and both have evolved and significantly changed during the last few centuries, benefiting from the spread of democratic ideals and becoming key features of the majority of Western countries. ये सिमिलरिटी दी गई है कि दोनों में रूल्स लिखे गए हैं, एक लिमिट्स बताई गई है, दोनों में राइट्स बताए गए हैं कि गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं। ओके, और दोनों में ही टाइम के साथ चेंज आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो रूल्स बना दिए गए वो फिक्स है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर रिक्वायर, मतलब बिकॉज ऑफ द एनी रिक्वायरमेंट, अगर जरूरत लगी तो उनमें चेंजेस भी किए गए। डिफरेंस क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाइज in the fact that the Constitution is generally a written document created by the government, often with the participation of the civil society, while constitutionalism is a principle and a system of governance that respects the rule of law and limits the power of the government. Most modern constitutions were written years ago, but laws and norms had already been evolving and mutating for centuries and continue to do so. The Constitution and laws in general is a living entity that should adapt to the changing features of the modern world and of modern societies. Failing to adapt the Constitution without losing its core principles and values may lead to an obsolete and unadapted governance system. ओके, एक हमने कहा रिटर्न डॉक्यूमेंट है और एक क्या है, उस चीज को मानना, जो रूल्स बनाए गए हैं उस चीज को मानना। ठीक है, दोनों में ही जैसे बात है, दोनों ही अब समय के साथ चेंज हो रहे हैं, जहाँ जरूरत पड़ रही है उससे रिक्वायर हो रहे, जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दोनों में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका दो टर्म के साथ बेसिकली जो है ये टोटली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। दो टर्म आपने यहाँ सीखी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपने यहाँ से देखा। ओके, so I hope students it is very much clear to you. Thank you everyone.